Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, the topics which I have selected for today's lecture, it includes structure and function of endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, peroxisomes, as well as glioxysomes. Let's start our third lecture of cell biology with endoplasmic reticulum. Endo means inside and plasmic word refers to the plasma membrane. Inside plasma membrane, reticulum mean a network. It's a complex network of interconnected tubules which starts from outer nuclear membrane and continues almost throughout the cytoplasm to cell membrane. These may be flattened sheets, sacs, or tubules that may show multiple time branching ends as well as they're connected at certain points. As you can see in this diagram, the outer nuclear membrane is continuous with the endoplasmic reticulum. इसमें पहले कनेक्टेड होगा बेटे RER, देन SCR, और SCR की जो ट्यूब्यूल्स हैं ऑलमोस्ट सेल मेम्ब्रेन तक इसको सराउंड कर रही होंगी. तो ये इसकी एक कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे शोन है और इस डायग्राम में भी ज्यादा क्लैरिटी से आपको नजर आ रहा है दैट आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये जो आपको रफ सरफेस नजर आ रही है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, इट इज rough endoplasmic reticulum which is mainly concerned with synthesis of proteins, while second जो आपको sac like tubular structures नजर आ रहे हैं without attached ribosomes, they are termed as SCR, smooth endoplasmic reticulum. SCR, smooth endoplasmic reticulum, they are concerned mainly with metabolism of lipids with a variety of other functions as well. इनकी इंटरनल स्पेस को हम सिस्टर्नल स्पेस कह रहे हैं, जबकि कोई भी इसका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर या कोई भी फ्लैटेंड शीट एट एनी टाइम, इसे हम नाम दे रहे होते हैं एक सिस्टर्ना, प्लूरल है जिसका सिस्टर्नी. सिस्टर्ना क्लोज ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जिसके अंदर कोई कंटेंट्स मौजूद हो. और ये इनर साइड जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इट इज न्यूक्लियस. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी बेसिक दो टाइप्स SCR एंड RER. जैसे कि आपको बताया, RER they are mainly concerned with protein synthesis due to attached ribosomes, and SCR they have other functions as well as metabolism of lipids. They perform a variety of functions such as detoxification is performed by SCR. Storage of calcium ion is the main function of SCR in case of muscle cells. And most cells, they contain both types of endoplasmic reticulum. But some cells, they have a relatively more abundant RER, which are mainly concerned with protein synthesis, secretory cells. And certain cells which are having a major role in detoxification, such as liver cells, or which are having main role for the lipid metabolism, they may be abundantly having SCR as compared to RER. यूजुअली सेल्स के अंदर ये दोनों टाइप्स RER की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मौजूद होंगी. पहला डिफरेंस RER SCR में हमने डिस्कस कर लिया, राइबोसोम्स का होना. सेकंड ये ना होना, सेकंड है इट्स मेनली SCR is concerned, it's mainly formed of vesicles and tubules, and rough endoplasmic reticulum is said to be formed of cisternae and a few tubules. That is, it is more sac-like. Smooth endoplasmic reticulum, it is engaged in the synthesis of glycogen, lipids as well as steroids, while RER they perform main function in the synthesis of proteins due to attached ribosomes. ये आपको एक RER rough endoplasmic reticulum का एक सिस्टर्ना यहाँ पे शोन है बेटे. और इसमें आउटर सरफेस के ऊपर ये जो अटैच स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, these are attached structures which are known as ribosomes. और ये ribosomes ये रिलीज कर रहे होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स इनटू द लीमन ऑफ RER. RER के लीमन में ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स रिलीज करेंगे which are ultimately released into SCR, and then they are modified via Golgi apparatus before secretion to the outside.
Basically, ribosomes exist in two forms as you have studied. Either they are in the free form or they may be membrane bounded as well. Free ribosomes, which are found in the cytoplasm, they also synthesize protein while attached ribosomes they are having the same function. Then what are the major differences between the proteins synthesized by free or attached ribosomes? First, we are going to have a look on the proteins which are synthesized by free ribosomes. This class includes protein which are going to perform their function within the cytosol, such as enzymes for glycolysis, enzymes for fermentation, and proteins of the cytoskeleton which are staying in the cytosol or cytoplasm. They are synthesized by ribosome. Simply, इनकी packing required नहीं होती. That's why they are not passing through RER, SCR or Golgi apparatus. Then peripheral proteins of cytosolic surface of membrane, जो inner side of plasma membrane पे peripheral protein attached हैं, वो भी usually free ribosomes बना रहे होंगे, but integral proteins नहीं. Proteins that are going to be transported within the nucleus for the synthesis of ribosome, for the synthesis of RNA, enzymes involved in DNA replication. All these proteins, they are synthesized by free ribosomes. While proteins which are going to be incorporated into peroxisomes, chloroplast, or mitochondria, they are also synthesized by free ribosomes. While chloroplast and mitochondria, they are having independent ribosomes as well. They can synthesize their own proteins. Synthesis of proteins which are carried out by attached ribosomes to the cytosolic surface, outer surface of RER. These include secreted proteins such as hormones, antibodies, which are going to be secreted out of the cell. इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जैसा कि हमने पढ़ा, जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं वो फ्री राइबोसोम्स, और जो अटैच्ड इंटेग्रल प्रोटीन्स हैं which are acting as carriers or channel proteins in the plasma membrane, they are synthesized by attached ribosomes. Soluble proteins that reside within compartments of endomembranous system, including ER, Golgi apparatus, lysosomes, endosomes, vesicles, as well as plant vacuoles. तो ये proteins भी attached ribosome से synthesize हो रहे हैं. As you can see, free ribosomes within the cell, they are freely suspended within the cytoplasm, and they are synthesizing proteins which are going to be used within the nucleus, mitochondria, chloroplast, or even sometimes peroxisomes. But membrane-bounded ribosomes, they are involved in the synthesis of proteins which are going to be secreted inside cytosol of inside cisterral space of endoplasmic reticulum. यहाँ से फिर मॉडिफाई होके ये गोल्जी apparatus के थ्रू मॉडिफाई होके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, secretory vesicles, endosomes या अल्टीमेटली लाइसोसोम्स तक सिक्रीट होंगी. तो ये इनका अटैच्ड और फ्री राइबोसोम्स का डिफरेंस था बेटे. अदरवाइज एससीआर की जो फर्दर फंक्शंस आप डिटेल से अगर डिस्कस करें, SCR, they are extensively developed in number of cells, and certain cells such as skeletal muscle cells, kidney tubules, and steroid producing endocrine glands, lipid hormone producing endocrine glands, they are abundantly having SCR. SCR is mainly concerned in case of endocrine glands for the production of steroid hormones and detoxification in the liver. That's why they are abundantly found in hepatocytes, including ethanol, its components. Detoxification is carried out by collection of oxygen transferring enzymes, oxygenases, including cytochrome P450 oxidases family. These enzymes noteworthy for the lack of substrate specificity, being able to oxidize thousands of different hydrophobic compounds and convert them into hydrophilic. इससे क्या फायदा होगा? इससे उनकी जो रिमूवल है वो सॉल्युबल हो जाएंगे जाहिर है, और फिर उनकी रिमूवल बाय यूरिनेशन किडनीज के थ्रू आसान हो जाएगी. दैट्स देयर फंक्शन. Smooth endoplasmic reticulum, they are also involved in sequestering calcium ions within the cytoplasm of cells such as skeletal muscle cells.
स्केलेटल मसल सेल्स में आपने SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक स्पेसिफिक नेम भी पढ़ा हुआ है, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Sarcoplasmic reticulum, they are heavily branched within the cytoplasm of skeletal muscles. और skeletal muscles में ये T tubule, transverse tubule, जो sarcolemma, cell membrane की extensions बनती हैं, उनको surround कर रहे होते हैं for the receiving reception of stimuli coming from the motor neuron via neurotransmitters. The regulated release of calcium from the SCR of skeletal and cardiac muscle cells, known as sarcoplasmic reticulum over there, it triggers contraction by release of calcium ions. The next organelle of our discussion is Golgi apparatus, which was discovered by Camillo Golgi in 1898, and later on in 1906 he was awarded with the Nobel Prize for this magnificent discovery of Golgi apparatus. Golgi complex is associated with endoplasmic reticulum, and it is mainly concerned with secretions or modification of synthetic products. As you can see over here, Golgi apparatus और RER, SCR इनका आपस में कनेक्शन एक लिंक मौजूद है, और इससे बनने वाली ग्रीन वेसिकल्स आप उनको देख सकते हैं, दे आर बीइंग रिमूव्ड आउट ऑफ द सेल बाय एक्सोसाइटोसिस, या सेल से बाहर जो है इनको सिक्रीट आउट किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स और वेसिकल्स. Golgi complex, as we have studied, named after Camillo Golgi, who discovered it. It is composed of flattened sacs of membrane-bounded cisternae. They were also present in RER and SCR. These cisternae, they are originating from the cisternae of transfer vesicles of endoplasmic reticulum. वही सिस्टर्नल वेसिकल्स इनके साथ फ्यूज करती हैं, और ये भी हमारे पास सिस्टर्नल स्टैक ही कहलाएगा. Golgi apparatus, they are more abundantly found in those cells which are having secretory activities, because they are involved in sorting, packaging, as well as secretion of proteins as well as lipids. प्रोटीन उस फॉर्म में सिक्रीट करेंगे जब इनसे इनके पास RER का मटेरियल आ रहा है, और लिपिड्स उस फॉर्म में जब SCR अपना मटेरियल इन तक कन्वे कर रहे हैं. Just look at this. ये हमारे पास Golgi apparatus का सिस्टर्नल स्टैक शोन है, जिसमें एक साइड से वेसिकल फ्यूज कर रही है और दूसरी साइड से वेसिकल जो है वो इजेक्ट आउट कर रही है, रिमूव आउट कर रही है. Golgi apparatus और इन वेसिकल्स को अगर इंक्लूड कर लिया जाए, जैसे इस ग्रीन सर्कल के अंदर अगर हम बात करें, इट्स नाउन एज Golgi complex. Golgi apparatus with associated vesicles is known as Golgi complex. Proteins that are synthesized by the ribosomes and are sealed off in little packets from the RER and then SCR, they are known as transfer vesicles coming from rough endoplasmic reticulum. Transfer vesicles endoplasmic reticulum से pass करेंगी Golgi apparatus तक, and they will fuse with it. Golgi apparatus के साथ जब ट्रांसपोर्ट वेसिकल फ्यूज करती हैं, जिस साइड से फ्यूज करती हैं, दैट साइड इज नोन एज सिस फेज, फॉर्मिंग फेज नियर टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जिस साइड से वेसिकल मैच्योर होकर निकलती हैं, दैट इज नोन एज मैच्योरिंग फेज, ट्रांस फेज, और सिक्रीटरी फेज, जहां से सिक्रीटरी वेसिकल्स रिमूव आउट होंगी आफ्टर मॉडिफिकेशन. केमिकल मॉडिफिकेशन क्या है जी प्रोटीन्स की और लिपिड्स की? दे आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स बिफोर देयर रिलीज और फर्दर यूज in the cytoplasm. When the vesicle reach the plasma membrane, they fuse with it and release their contents to the outside cell by exocytosis. They are most abundant cells that secrete chemical substances such as glands, and Golgi apparatus, they are also involved in the production of lysosomes, as we are going to have some discussion in the next section as well. इनसे lysosomes भी बनते हैं, which are splitting bodies involved in the digestion process of intracellular digestion,
और समटाइम ये जो लाइसोसोम्स हैं इनके हवाले से जब हम डिस्कशन करेंगे ऑटोफैगी के थ्रू सेल रिसाइकलिंग में भी असिस्ट कर रहे होंगे, हेल्प कर रहे होंगे। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये भी आरईआर, एससीआर, गोल्जी ऑपरेटस और फिर लाइसोसोम जो है लिंक को या उनके जो फंक्शंस रिलेटेड है उनको शो कर रही है। गोल्जी ऑपरेटस को अगर हम इसके सिस्टर्ना को फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसकी फेजेस को हम सिस, ट्रांस और मीडियल फेजेस में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। सिस गोल्जी नेटवर्क जो नियर टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एचसीआर, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली साइड पे है, और इसके सिस्टरने सिस सिस्टरने कहलाएंगे। मीडियल सिस्टरने दे आर नोन एज मीडियल सरफेस, और आउटर फॉर्म ट्रांस गोल्जी नेटवर्क या ट्रांस सिस्टरने कहलाएगा। The Golgi complex is also the site of most of cell complex polysaccharides, and जो हम बात कर रहे थे कि मॉडिफिकेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन, उसमें यूजुअली ये ओलिगोसैकेराइड के रेजिड्यूज ऐड करते हैं टू द प्रोटीन्स और लिपिड्स थ्रू ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेजेस। And movement of material through Golgi complex is explained via two models. One of them is vesicular transport model. Another is cisternal maturation model. What is the difference between these two models? पहले हम बात करने जा रहे हैं सिस्टर्नल मैच्योरेशन मॉडल पे कि सिस्टर्ने मैच्योर होके मॉडिफाई होके आगे शिफ्ट कर जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं कंप्लीटली। Until mid-1980s, it was generally accepted that Golgi cisternae were transient structures. They are not permanent, they are formed transiently, and they are continuously shifted from one place to the other. They're actually moving. It was supposed that Golgi cisternae formed at the cis phase of the stack, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली साइड होगी वहां पे ये बनेंगे, और फिर भी मूव कर जाते हैं टू द नेक्स्ट, और वहां पे नेक्स्ट सिस्टर्नी बनते रहते हैं। एंड दे फिजिकली मूव फ्रॉम द सिस टू द ट्रांस साइड, जैसा कि इस डायग्राम में भी आपको इनकी फिजिकल मूवमेंट नजर आ रही है। दिस इज नोन एज सिस्टर्नल मैच्योरेशन मॉडल, because according to the model each cisterna matures into the next cisterna along the stack. The next model which we are going to share over here, that is vesicular transport model, जिसमें ये कहा गया कि सिस्टर्नी अपनी जगह पे फिक्स्ड होते हैं, बट उसके साथ जस्ट वेसिकल फ्यूज और बड ऑफ करती रहती हैं। इन द मिड 1980s and to the mid 1990s, the maturation model of Golgi movement was largely abandoned and replaced by an alternate model which proposed that the cisternae of a Golgi stack remain in place as stable compartments. कि ये स्टेबल होते हैं, ये मूव नहीं करते अपनी जगह से, जैसा कि सिस्टर्नल मैच्योरेशन मॉडल में पहले कहा गया। ये जो बाद वाला मॉडल है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मॉडल, इसमें क्या कहा गया, which is known as vesicular transport model, cargo, secretory lysosomal and membranous proteins is shuttled through Golgi stack. उनकी शटलिंग होती है, सिस्टर्नी खुद नहीं मूव करते बल्कि उनके साथ अटैच वेसिकल्स वो ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं थ्रू फ्रॉम सिस्टर्नल गोल्जी नेटवर्क टू द ट्रांस गोल्जी नेटवर्क in vesicles that bud from one membrane compartment and fuse with the neighboring compartment of the second cisternae and so on. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये गोल्जी सिस्टर्ने के साथ फ्यूज करती हैं, यहाँ पे मटेरियल रिलीज किए, फर्दर मॉडिफाई हुए, और ये वेसिकल इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बड ऑफ करती रहती है। It is known as vesicular transport model. It's another representation of these two models. Vesicular transport model में आप फोकस कीजिए, जस्ट वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट हो रही हैं सिस्टर्ने में, लेकिन सिस्टर्नल मैच्योरेशन मॉडल में पूरे का पूरा सिस्टर्ने फिजिकली अपनी जगह चेंज कर रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर वेसिकल्स में कन्वर्ट होके खत्म हो जाता है। Next structure which we are going to have discuss over here is about lysosomes, which are also formed from the Golgi apparatus. They are considered to be digestive organelles in animal cells, and a typical lysosome contain at least 50 different hydrolytic enzymes. Some of them they're shown on the right side here, such as acid phosphatases, nucleases, proteases,
hydrolyzing enzymes, polysaccharidases and oligosaccharidases, sphingolipid hydrolyzing enzymes, and lipid hydrolyzing enzymes or lipases. ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो बहुत से या वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करने में सेल्स के अंदर हेल्प कर रही होती हैं. Taken together, lysosomal enzymes can hydrolyze virtually every type of biological macromolecule. These enzymes of lysosomes share an important property that all of them they are having optimal activity at acidic pH. That's why also known as acid hydrolysis. The pH optimum of these enzymes is suited to low pH of lysosomal compartments, which is approximately 4.6. लेकिन ये pH आपके लिए एकदम से establish नहीं होती, बल्कि fusion with the vesicles उसके दौरान ये establish होती है by uptake of hydrogen ions. The high internal proton concentration is maintained by proton pumps present in the organelle bounded membrane or lysosomal membrane. And lysosomal membranes, they also contain a variety of glycosylated integral proteins whose carbohydrate chains are thought to form a protective lining that shield the membrane from attack by enclosed enzymes. क्योंकि इतने स्लेयर एंजाइम्स हैं तो लाइसोसोम की अपनी मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव होनी चाहिए. तो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ग्लाइकोसाइलेटेड इंटीग्रल प्रोटीन्स की वजह से होती है. The presence within a cell of what is in a sense a bag of destructive enzyme, that's why they are also known as suicidal bags. The best study role of lysosome is the breakdown of material into the cell from the external or extracellular environment. Many single cell organisms they are totally dependent upon this activity by lysosomal digestion, intercellular digestion, and the resulting nutrient pass through the lysosomal membrane into the cytosol. In mammals, phagocytotic cells such as macrophages, neutrophils, they function as scavengers that ingest debris and potentially dangerous microorganisms. Lysosomes एक तो इंटरसेलुलर डाइजेशन करें, दूसरा सेल के अंदर ऑटोफेगी में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. लुक एट दिस डायग्राम जो हमने पहले भी देखी कि गोल्जी apparatus से बन रहे हैं और फिर जब ये बाहर से आने वाले किसी फूड वैक्यूल के साथ मिलते हैं, they form secondary lysosome. Newly formed lysosome is referred as primary lysosome. जबकि बाहर से जब कोई वैक्यूल आता है, फूड वैक्यूल, उसके साथ फ्यूजन होती है, they form secondary lysosome और phagolysosome. और अगर ये सेल के कोई अपने ही पार्ट्स को इंगल्फ कर रहे हो तो इन सेकेंडरी लाइसोसोम को हम ऑटोफेगोसोम का नाम भी देते हैं, as is the case over here. Autophagosome in case of autophagy is being formed around a mitochondrion. तो इसमें मल्टीपल एंजाइम्स, मल्टीपल लाइसोसोम जो कि प्राइमरी कहलाते हैं, जब वो अपनी ऑर्गेनेलीज को सराउंड कर रहे होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ट्रॉफिक सिग्नल्स, कि अब इस ऑर्गेनेली को डाइजेस्ट करना है या सेल को खत्म करना है, तो उस वक्त वो फिर मल्टीपल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मिलके एक ऑटोफेगोसोम या सेकेंडरी लाइसोसोम का स्ट्रक्चर बनाएंगे, which is converted into autolysosome, and जो उसके अंदर बॉडी इंक्लूड होगी that will be digested in the form of residual body. Lysosomes they also play a key role in organelle turnover, that is the regulated destruction of the cells on organelles, and it is termed as autophagy. There is also a very helpful process during developmental stages such as digestion of tail. Human tail is possible due to the lysosomal activity. Digestion of membranes between the digits is due to the lysosomal activity. The origin of double membranous mammalian cells is unclear, with possibilities ranging from ER to other outer mitochondrial membrane. Once formed, the outer membrane of the autophagosome fuses with the lysosome, generating a structure called autolysosome, in which both the inner membrane of autophagosome and the enclosed contents they are degraded. The products of these degradative reactions are made available to the cell. That is, ये जो आप membrane observe कर रहे हैं, ये lysosome की fusion से पहले बनेगी, जिसे हम कहेंगे ये phagophore के थ्रू बन रही है. That is not clear कि ये कैसे बनती है, लेकिन ये भी membrane ये जो blue color में shown है, प्लस इसका enclosed organelle, ये भी lysosomal activity की वजह से digest हो जाएगा साथ ही.
There are certain disorders which can take place in the absence of enzymes of lysosomes. For example, gangliosidosis M1, which is mental retardation, liver enlargement, and skeletal involvement. Death by age 2 years usually. और इसमें जो missing enzyme है ganglioside mental retardation से related type 1 beta galactosidase. Tay-Sachs disease hexosaminopsidase alpha या type A, इसमें भी mental retardation, blindness या death हो जाएगी age 3 तक. Fabry's disease, इसमें अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज टाइप ए जो है वो मिसिंग होगा और प्रिंसिपल स्टोरेज सब्सटेंस ट्राई हेक्सो हेक्सोस सेरामाइड. स्किन रैश होंगे इसमें, किडनी फेलियर, पेन इन लोअर एक्सट्रीमिटीज लिम्स. सैंड ऑफ डिजीज, इसमें हेक्सोसा अमाइनोसाइडेज टाइप ए एंड बी दोनों मिसिंग होते हैं, सिमिलर टू टे-सेक डिजीज बट मोर रैपिडली प्रोग्रेसिंग. गॉशेस डिजीज, इसमें ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम मिसिंग है और लिवर और स्प्लीन एनलार्जमेंट कॉज करता है, इरोजन ऑफ लॉन्ग बोन्स, मेंटल रिटार्डेशन एंड इन इनफर्टाइल फॉर्म ओनली. नेमैन्स पिग डिजीज, इसमें स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम एब्सेंट है और स्फिंगोमाइलिन सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है, लिवर स्प्लीन एनलार्जमेंट कॉज करेगा एज वेल एज मेंटल रिटार्डेशन. Farber's lipogranulomatosis, ceramidase enzyme is absent and ceramide substance is deposited. It is painful and progressively deformed joints, skin nodules, death within a few years. Krabbe's disease, galactocerebrosidase enzyme is missing in this case और इससे भी myelin sheath का loss हो जाएगा. It may cause mental retardation and death by the age of 2 years. And sulfatide lipidosis, aryl sulfatase type A, सल्फेटाइड की डेपोजिशन करवाएगा अगर ये एंजाइम एब्सेंट है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा ये सल्फेटाइड, तो इससे भी मेंटल रिटार्डेशन या डेथ इन फर्स्ट डिकेड ऑब्जर्व की गई है. These are certain congenital or by birth diseases which are due to lysosomal enzymes. The next portion of lecture is going to cover microbodies such as glycosomes and peroxisomes. There are a lot of microbodies which exist in eukaryotic cells. A microbody or a cytosome is a type of organelle that is found within cells of plants, protozoa, as well as animals. Organelles in the microbody family, they include hydrogenosomes, organelle of anaerobic ciliates, glycosomes, peroxisomes, and glycosomes, organelle containing glycolytic enzymes. Today, according to your contents, we are going to have a detailed discussion about peroxisomes and glycosomes. ये alternating organelles भी हैं कि glycosomes सिर्फ initial stage पे present होते हैं, बाद में ये भी convert हो जाते हैं peroxisomes के अंदर, इसलिए glycosomes peroxisomes को interconvertible organelles भी कहा जाता है. इनमें सिंपल एक outer membrane होती है, that is lipid membrane like other membranes of the endomembranous system within a cell. Matrix मौजूद होगा और एक internal crystalline core, hard core inside that cell. In case of vertebrates, these organelles, microbodies, they are especially prevalent, more common in liver as well as in kidneys. As far as peroxisomes are concerned, it is a specialized metabolic compartment bounded by a single membrane, as we have seen observed in the previous slide as well. Peroxisomes, they contain enzymes, especially peroxidases, oxidases, which are responsible for transfer of hydrogen atoms from various substances, and then they transfer these atoms to the oxygen, such as for the production of hydrogen peroxide. It's a byproduct which is formed as well as rapidly degraded by the peroxisomes. Reactions may have different functions. Some peroxisomes, they use oxygen to break fatty acids down into smaller molecules that are transported into mitochondria and are used as fuel for cellular respiration. Peroxisomes in the liver, they detoxify alcohol and harmful compounds by transferring hydrogen from the poisons to the oxygen.
Hydrogen peroxide formed by peroxisome is itself toxic, but the organelle also contain an enzyme that converts hydrogen peroxide to water. क्योंकि हाइड्रोजन peroxide टॉक्सिक है सेल्स के अंदर, ये ज्यादा देर तक इसको रखना नहीं होता, इसको फौरन से डिकम्पोज भी करना होता है. The enzyme that produce H2O2 and those that dispose of the toxic compound are sequestered away from other cellular compartment that could be damaged. पेरोक्सोम इसके अलावा जो है वो आप देखेंगे फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी इनका रोल होता है इन प्लांट्स. Specialized peroxisomes called glycosomes, they are found specifically in plant seeds in the initial stages, and they are involved in the conversion of oxaloacetate, or you can say conversion of fatty acids or lipids into glucose or carbohydrates by entering acetyl coenzyme A into the citric acid cycle or Krebs cycle. जैसे 2 citric acetyl coenzyme है जो fatty acid से भी आ सकते हैं, कन्वर्ट होते हैं citrate फिर आइसोसिट्रेट में, और फिर बनता है इसमें ग्लाइकोसिलेट प्लस असक्सिनेट थ्रू आइसोसिट्रेट लाइज एंजाइम. मेलेट सिंथेज एंजाइम कन्वर्ट करेगा इसको मेलेट में, और फ्यूमारेट में आल्सो बी फॉर्म्ड इन द Krebs cycle as well. Malate is again converted into oxaloacetate, which is ultimately moved off out of the glycosome for gluconeogenesis or glucosynthesis. How peroxisomes are related to other organelles is still an open question. They grow larger by incorporating proteins made in the cytosol and endoplasmic reticulum, as well as lipids made in the ER and within the peroxisomes itself. Sometimes they are considered as self-replicating organelle as well, but most of the time they are considered as organelles which have origin from endoplasmic reticulum. Thank you so much. That was all about today's lecture. Allah Hafiz.